Hello guys. In the last lecture we had studied about fund flow statements. थोड़ा सा part हमने complete किया था. So we had begun with understanding what exactly is a fund flow statement, right? And where is it used? तो उसकी uses भी हमने complete कर लिए थे. Apart from that, we had also completed how do you actually go about preparing a fund flow statement, correct? तो उसमें I think दो statements हमने complete कर ली थी. Number one was the statement of changes in working capital, and the other one was your funds from operation statement, right? So before moving on to actually understanding how do you go about making a fund flow statement, we'll first revise both of these as completed in the previous lectures, right? So let's just quickly see how do you go about making a statement of changes in your working capital. Okay, now, when we talk about statement of changes in working capital, this basically depicts how your working capital has increased or decreased by comparing your current assets and current liabilities. Okay, तो क्वेश्चन में आपको 2 साल का डेटा दिया होगा. One will be your previous year, the other one will be the current year. Now, what exactly do you have to do? Number one, you have to mention all your current assets, right? Then you'll be comparing the two amounts of your previous year and your current year. Okay, upon comparison you'll come to know whether that particular asset has increased or decreased. तो वो अमाउंट आप लिखेंगे इन योर चेंजेस कॉलम, राइट? अगर वो इंक्रीज हुआ होगा नेचुरली द अमाउंट विल गो इन द इंक्रीज कॉलम. अगर डिक्रीज हुआ होगा तो नेचुरली द अमाउंट विल गो इन द डिक्रीज कॉलम, राइट? सो एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन्स, सबसे पहले आपका होता है पर्टिकुलर्स कॉलम. Okay, then you have your amount of previous year, current year, and then you have effect of changes in your working capital, wherein you'll divide this column into two: increase or decrease, right? You first mention your current assets, जैसे कि cash at bank, cash in hand, bills receivable, debtors, investment, prepaid expenses, so on and so forth, right? दोनों सालों के आप amounts लिखते हैं. देन यू फाइंड आउट वेदर देर इज़ एन इंक्रीज. जैसे कि आपका प्रीवियस ईयर का अगर अमाउंट 500 है और करंट ईयर में 1000 है, तो इसमें कितना चेंज आया? नेचुरली 1000 माइनस 500 you get 500, right? Once you've mentioned your current assets, in a similar fashion you mention your current liabilities. It could be your creditors, bills payable, outstanding expenses, so on and so forth. उसको भी आप कंपेयर करते हैं. जो भी चेंज आया यू राइट इट इन द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल कॉलम, राइट? एंड दैट इज़ हाउ यू कम टू नो द नेट इफेक्ट ऑफ दिस इंक्रीज और डिक्रीज इन योर करंट असेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज. ठीक है? नाउ इफ यू केयरफुली सी, इफ देयर इज एन इंक्रीज इन करंट असेट्स, नेचुरली वर्किंग कैपिटल विल इंक्रीज. Similarly, if there's a decrease in current assets, working capital is bound to decrease. जैसे कि अगर debtors बनते हैं तो that means that you're going to get more money. Your working capital will increase. Similarly, current liabilities का inverse relationship है working capital के साथ, correct? Okay, so this was all that we read about statement of changes in working capital. Moving on to your funds from operation statement. Now when we talk about funds from operations, जब आप एक पर्टिकुलर बिजनेस ओपन अप करते हैं, क्या पैसे आप सिर्फ और सिर्फ सेल से कमाते हो? नेचुरली नॉट, राइट? आपके और भी दूसरी दूसरी टाइप की इनकम हो सकती है, जैसे रेंट इनकम, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, सो ऑन एंड सो फोर्थ. नाउ एज द नेम सजेस्ट्स, हम क्या बना रहे? वी आर ट्राइंग टू मेक अ स्टेटमेंट ऑफ फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस. कहने का मतलब ये है कि आप वो स्टेटमेंट, आप वो प्रॉफिट निकालने की कोशिश कर रहे हैं जो आपको आपके प्योर नॉर्मल बिजनेस से हुआ है, करेक्ट? नाउ इफ़ यू रिमेंबर, जो स्टेटमेंट हमने बनाया था ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, द वन दैट वी हैड क्रिएटेड इन रेशियोज, वहाँ पे हमने सारे प्रॉफिट में से वी हैड डिडक्टेड ऑल द ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस and we had added all the non-operating incomes to it. Okay, now if I want to find out कि मेरा operations से कितना profit हुआ है, what will I have to do? Naturally जितने भी expenses जो कि मेरे नॉन ऑपरेटिंग है, ये प्रॉफिट से जो मैंने ऑलरेडी डिडक्ट कर दिए हैं, आई विल हैव टू ऐड देम बैक, राइट?
क्योंकि ये मेरे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे और मुझे क्या निकालनी है, मुझे निकालनी है मेरी ऑपरेटिंग इनकम, राइट। सो जितने एक्सपेंसेस ऐसे मैंने माइनस किए हैं जो कि नॉन ऑपरेटिंग हैं, आई विल हैव टू ऐड देम बैक. And on the other hand, the income which I have added to the profit, which is not exactly my operating income, जैसे कि रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, ये सारी इनकम मैंने प्रॉफिट में ऐड कर दी है, तो इसे मुझे क्या करना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो ऑन अहेड एंड डिडक्ट दिस फ्रॉम द प्रॉफिट, राइट. इसी को आप एडजस्टेड पीएनएल भी कहते हैं, ठीक है, जहाँ पे आप कर क्या रहे हो, जो भी डेटा आपको दिया हुआ है, you're basically trying to do what, make certain adjustments in that profit so as to so that you reach your desired profit from operations, right. So यहाँ देखेंगे प्रॉफिट्स आप लेंगे जो भी क्वेश्चन में दिए हुए हैं, यू गोइंग टू ऐड बैक ऑल द एक्सपेंसेस ऑलरेडी सब्ट्रैक्टेड, जैसे कि आपका डेप्रिसिएशन हो गया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, लॉस एंड सेल ऑफ एसेट, एनी ट्रांसफर टू डिफरेंट रिजर्व्स, ये सारे क्या एक्सपेंसेस हैं, मेरे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, ठीक है. And you are going to subtract all the non-operating incomes already added, जैसे कि रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट इनकम, ठीक है. ये सारी मेरी इनकम है जो मुझे ऑपरेशन से नहीं हुई है, तो ये मुझे क्या करनी है, डिडक्ट करनी है, राइट.